धन्यवाद। जैसा कि कहा गया कि मोदी जी ने जो सुशासन का मॉडल दिया है उसके विषय में भी कुछ चर्चा करेंगे एंड देन आल्सो ट्राई टू ड्वेल ऑन बदलता जम्मू कश्मीर एंड आल्सो द इंटर रिलेशन बिटवीन द टू बिकॉज टू कैन नॉट बी सेपरेट एंटायरली फ्रॉम ईच अदर। लेकिन उससे पहले राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है? What is the definition of nation first? And I think the easiest way to understand the essence of the nation first concept would be to try to study and understand the essence of the phenomena called Narendra Modi. And I'm saying so not simply for the sake of saying so, because as a student of science I have been taught to speak with evidence, and therefore I shall try to substantiate what I've said in the next couple of minutes. What is Modi at 20 that is being often talked about these days? Of course, he's the only head of state who has continuously been there for the last 20 years, first as chief minister, then as prime minister. But at the same time, Modi at 20 is also synonymous with a governance model. And what is that governance model? It's a governance model which has sustained for 20 years and promises to sustain for many more years. So it's a sustainable model of governance. And in the world of today, where we talk of sustainable goals, I think that is one of the hallmarks. Second, it is a model which has defied the principle of diminishing returns. And on the contrary, the returns, the dividends have been increasing with each passing year, which is normally not the case. And third, this is a governance model which has grown stronger with each challenge faced by it. For example, the challenge of COVID pandemic as Prime Minister and the Gujarat earthquake as the Chief Minister. And therefore, if you look back 8 years, soon after Shri Narendra Modi took over as Prime Minister on the 26th of May 2014, तो उनके जो आरंभिक 2 सप्ताह थे उसके क्या वक्तव्य थे? One of the earliest statements was, मेरी सरकार गरीब को समर्पित, कि समाज के वो वर्ग जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, मुख्य धारा से छूट गए, उनको प्राथमिकता दी जाएगी. Then if you look back, चाहे वो उज्ज्वला है, चाहे वो PM आवास है, चाहे वो किसान निधि है, जहां जहां जिसकी आवश्यकता थी वहां उसकी पूर्ति की गई. ये ना पूछा गया कि मजहब क्या है, धर्म क्या है, जात क्या है. ये भी नहीं पूछा कि पिछली बार इलेक्शन में वोट किसको दिया था. So he has also in a way introduced a new political culture, a new work style in the polity of India. इसी प्रकार उनका दूसरा बयान था कि देश के वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं उस तरह से विकसित ना हो पाए जैसे कुछ अन्य राज्य, उनको विकसित करके विकसित राज्यों के स्तर पर लाने का प्रयास रहेगा. एंड ही गेव अ ब्यूटीफुल एग्जांपल. उन्होंने कहा कि भारत माता का समूचा विकास तभी संभव है जब दोनों भुजाओं का एक समान विकास हो. यदि एक भुजा दुर्बल रहे और दूसरी बलवान हो जाए तो समूचा विकास संभव नहीं. एंड आई थिंक द एग्जाम्पल इज नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर. ही वॉज एक्चुअली रेफरिंग टू दीज peripheral territories. Northeast today is being cited as a development model of Modi's governance. If you just look back 8-10 years, Northeast was in news for all the wrong reasons. Insurgency, violence, road blockades. I think now the new generation there would even hardly recall what was it like. Now it is known for the state-of-art bridges and state-of-art highways. There was a time when the youth from Northeast felt apprehensive walking down the streets of Delhi. Today, the youth of Northeast have virtually flooded the aviation industry, the tourism industry, the hotel industry across the country. So that is the equitable growth that he was referring to. और उनका तीसरा कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करना, जमीनी लोकतंत्र, the grassroots democracy. And I think one of the most striking example is
what was being said in the introductory remarks, Jammu Kashmir. 70 वर्ष के बाद जिला परिषदों का गठित जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल के साथ हुआ। मुझे विश्वास है आने वाले समय में कुछ इतिहासकार, कुछ विश्लेषक इस बार पर भी विचार करेंगे, आकलन करेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि जब देश के हर राज्य में, हर प्रदेश में जिला परिषदें थीं, जम्मू कश्मीर को उससे क्यों वंचित रखा गया। और विडंबना ये कि सरकारें उन राजनीतिक दलों की रहीं जिनका नारा था सेल्फ रूल। और यदि सेल्फ रूल का लोकतंत्र में अर्थ ये है कि ऐसा रूल जिसका जन्म धरती से हुआ हो, तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं सेल्फ रूल की जब जिला परिषदों का वजूद ना हो, जब पंचायतों के चुनाव ना होते हों। सो सेल्फ रूल फॉर हुम? आई थिंक पहली बार मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर की जनता को सेल्फ रूल क्या होता है इसका परिचय दिया। इसी प्रकार कमिटमेंट टू ग्रास रूट डेमोक्रेसी का एक और उदाहरण कि पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को 65-70 वर्ष के बाद भी नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं था। आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे which would have such a state of affairs. If you go and reside in a country, you get citizenship automatically after a couple of years. लेकिन ये वो वर्ग था जिसने देश को 2-2 प्रधानमंत्री दिए, उप प्रधानमंत्री दिए। इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, LK अडवाणी भी कराची से आए थे। लेकिन चूंकि इस वर्ग का कुछ हिस्सा जाकर के जम्मू कश्मीर में बस गया, तो तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के स्वार्थ के कारण इनको नागरिकता के अधिकारों से वंचित रखा गया। देश भर में अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब को आरक्षण मिला, लेकिन जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल रिजर्वेशन वाज नॉट अकॉर्डेड टू दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो मैं ये कहने का तात्पर्य ये कि आई थिंक व्हेन यू लुक बैक, मोदी एंड हिज टीम लेड बाय हिम हैव रीजनेबली वॉक द टॉक। और ये आरंभिक बयान है, क्योंकि अक्सर मैं क्या समझता हूँ कि जब मोदी जी ने ये बात कही होगी कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित, मैं नहीं जानता कितने लोगों ने इसको गंभीरता से सुना होगा कि उस समय देश में इस प्रकार का आलम बना हुआ था, निराशावाद का, पेसिमिज्म का। आम नागरिक के मन में सिनिसिज्म था। उसे पता था कि नेता आते हैं, भाषण करते हैं, शाम तक नेता भी भूल जाता है क्या बोला, और जनता भी समझती है कि इज मोस्ट फॉरगेटेबल। लेकिन why I am recalling is that we have the evidence of having walked the talk under Prime Minister Modi. And when you talk of governance, when you talk of the different success stories that India has gone through in the last 8-9 years, I'm sure one day somebody would like to research on what were Modi's strengths, which were the secret of these success stories. और संक्षेप में देखें तो सबसे पहले हिज कैपेसिटी टू टेक आउट ऑफ बॉक्स डिसीजंस। आपको मालूम नहीं, याद है कि ना हो कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद ही सितंबर 2014 में मोदी जी ने एक आदेश जारी करके बरसों से चली आ रही अंग्रेज राज की कुरीति को समाप्त किया, टू गेट योर सर्टिफिकेट्स, योर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड बाय अ गेजेटेड ऑफिसर। और हमारे जैसे लोग जो सेमी रूरल पृष्ठभूमि से आते थे, जो 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंचते तो कहा जाता था गेजेटेड अफसर से दस्तखत कराओ, तो ये नहीं समझ आता था गेजेटेड अफसर उपलब्ध कहाँ होगा, वो कैसा प्राणी होगा, 2 नाक होंगे, 4 कान होंगे। कितनी बड़ी दुविधा से उसको निजात दी गई। And a message was sent across the nation that look, this is a government headed by Prime Minister Modi which has the capacity to trust the youth of this country. And in a nation with more than 70% population below the age of 40, how are we going to get along, how are we going to do business if we don't learn to trust this large section of below 40 society? His second strength and the trait which might have contributed to this sustainable model is his capacity to break the taboos of the past. आमतौर पर एक प्रवृत्ति रहती है, स्वभाव रहता है सरकार में कि स्टेटस को चल रहा है तो चलने दीजिए, कि 5 साल बाद चुनाव भी होना है। लेकिन here was a head of state who could
by conviction take decisions and then leave it to the people to decide कि वोट किसको देना है इलेक्शन के समय। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण एक और विभाग जिसके साथ मेरा संबंध है, अंतरिक्ष का। कई वर्षों से अंतरिक्ष विभाग गोपनीयता में काम कर रहा था। कभी कभी आप भी अखबारों में पढ़ लेते कि श्रीहरिकोटा से कोई लॉन्चिंग हुई है। बहुत सारे लोगों को ये समझ भी नहीं आता कि श्रीहरिकोटा किस प्रदेश में कहाँ है, बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ बाउंड्स। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मोदी जी ने स्पेस डिपार्टमेंट को, इसरो को पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। And in less than 3 years, we have more than 60 startups in the space department, and they are preparing for the Gaganyaan. And this has been possible because of the impetus given by him, which could have done earlier also, but nobody had the courage to break the taboo. And next year, possibly, we'll have the first non-human mission going up, then second unmanned, and followed by the first manned mission, maybe by 2024 or so. We had one earlier. One of the Indians went called Rakesh Sharma, but the mission was Soviet Union. So this will be purely indigenous. Similarly, atomic energy, again, was working in a wheel of secrecy. It's been open to joint ventures now. They can engage in partnerships for the time being with the PSUs so that they can expand their establishments. His third strength, which is again very unusual, to convert a government campaign into a mass campaign. लाल किले के परिसर से प्रधानमंत्री आह्वान देते हैं और देश की जनता उसको अपना लेती है। जो उनका पहला संबोधन था स्वतंत्रता दिवस 2014 के अवसर पर प्रधानमंत्री बनने के बाद, उसमें उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया और देश की जनता ने इसे अपना लिया। मेरे अपने क्षेत्र में एक छोटे से गांव में 9वीं कक्षा की बालिका ने अपने माता पिता से कहा कि चूंकि मोदी जी ने लाल किले से कहा कि बच्चियों के लिए टॉयलेट होना चाहिए, इसलिए मैं तब तक स्कूल नहीं जाऊंगी जब तक मेरे यहाँ टॉयलेट ना बने। जब हमें उसकी सूचना मिली तो मैंने कलेक्टर के साथ संपर्क किया। उसके घर में तो टॉयलेट बना ही बना, लेकिन उसकी जागरूकता के चलते जब सर्वे किया गया तो 200 और इस तरह से घर वहां पर पाए गए। ये दलित बस्ती थी। इसी प्रकार कोविड के दौरान मोदी जी ने कहा कि दिया जलाइए तो सबने दिया जलाया। मोदी जी ने कहा ताली बजाइए तो सबने ताली बजाई। मोदी जी ने कहा कि जनता कर्फ्यू करिए तो सबने जनता कर्फ्यू किया। And if you are not able to understand how deeply that means, just recall some of the other government campaigns. 1960 में शुरू हुआ था हम दो हमारे दो। आज देखिए घर घर जाके कितने दो हैं। So it's a great asset to have a head of state, and that is because उन्होंने अपनी निष्ठा, अपनी परिश्रम से उस प्रकार की विश्वसनीयता कमाई है, which has become an asset for the nation. And चौथा, I hardly need to say, is nation first. And again linking it to Jammu and Kashmir. 2018 में गठबंधन सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की। कभी आपने सुना? कोई मजबूरी नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था, कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उस गठबंधन सरकार से हट करके सरकार से बाहर निकलने का फैसला किया, जब ये लगा कि इस गठबंधन के जारी रहना देश के हित में नहीं है। सो दैट इज नेशन फर्स्ट, इवन अबव पावर, इवन अबव पार्टी। और इसी प्रकार अनेकों ऐसे जब नए कानून बनाए गए, आई डोंट नो हाउ मच हैज इट बीन रियलाइज्ड, here was a government headed by Modi which was doing away with the earlier rules and the earlier laws. हर सरकार इस बात का श्रेय लेती है, हर अधिकारी, हर मंत्री के साथ मेरे समय में ये नया कानून आया, ये नया नियम बनाएगा। Here is a government which will take pride in saying that so far we have done away with 1600 rules, which also includes this attestation or JSA, which also includes the abolition of interviews for selection so that we provide a level playing field. And then, as was being said by
the Raksha Mantri ji, technology. I think the singular contribution of Prime Minister Modi is that he has enabled the technology to enter every Indian household. और ये इसलिए संभव हुआ कि सभी मंत्रालयों के साथ, क्योंकि मैं 6-7 विभागों ज्ञान के भी देखता हूँ, बैठ करके ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ, मंथन हुआ, कहाँ पर किस विभाग को किस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, वेयर इट कैन स्टेप इन एंड हाउ बेस्ट. आज चाहे रेलवे है, चाहे सड़क है, चाहे स्मार्ट सिटीज है, हर जगह टेक्नोलॉजी. एंड कमिंग टू व्हाट वी वर टॉकिंग, टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, which is hardly talked about, because when we talk of technology, we talk of infrastructure. We seldom, sometimes we tend to overlook that the governance today also is highly technology based. Almost all the 80 ministries, 60 ministries are now online functioning, and that's the reason even during COVID time, the functioning, the working of the government of India did not get interrupted even for a single day. And the Ministry of Personnel, with which I am linked, though we had 50% of work from home, and I used to review every week, at the end of 1 week, of a given week, one of the junior officials told me, sir, the new dictum should be minimum attendance and maximum output, because some of them were working more when online. They were working on the weekends, they were working on Sundays, they were working on holidays. वो 10 से 5 का स्वभाव जाता रहा. And another striking example is the concept of aspirational districts, a novel concept. पहले ज़माने में होते थे backward district. तो मंत्री अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी जिले को बैकवर्ड की कैटेगरी में शामिल करवा लेता कि वहाँ कुछ एक्स्ट्रा फेवर मिल जाते. Now this was a scientifically based objective parameter based on 41 indices, health का indices, sanitation का, education का, accessibility का. A particular district could be number 1 in the country in education but be lower down in health. So there was a competitive mode introduced, how best to bring this district at par with the best district performing district of the state, and then with the best performing of the nation. This was again technology at its best, leading to governance. And again linking it to Jammu and Kashmir. Jammu Kashmir में एक प्रथा थी दरबार मूव की. 6 महीने श्रीनगर, 6 महीने जम्मू. It is our department, the administrative reforms and public grievances in the Ministry of Personnel, which helped the government of Jammu and Kashmir to totally shift online, as a result of which rupees 6,200 crore, which they were spending each time the capital moved from one city to the other, has been spared. So 200 करोड़ रुपया उनका लग जाता था ट्रांसपोर्ट का, फाइलें जम्मू से श्रीनगर पहुंचानी, and all the other related expenditure. And this is also been possible because of the technology push given by Modi and the government headed by him. And if you talk of Jammu and Kashmir, I think broadly speaking it's been at 2 levels. A, the development level, B, the governance level. अक्सर ये शिकायतें वहाँ रहा करती थी क्षेत्रीय भेदभाव की. एक क्षेत्र कहता था कि दूसरे को ज्यादा मिल गया, दूसरा कहता था कि पहले को ज्यादा मिल गया. आज in the last few years, particularly after 5th and 6th of August 2019, the statistics bear out there has been an equitable distribution of resources, equitable distribution of funds and equitable scale of development. 2 एम्स बन चुके हैं, 8 केंद्रीय राशि से मेडिकल कॉलेज बन गए हैं, रिंग रोड श्रीनगर और जम्मू में सड़कों का जाल बिछ गया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल एलिफेंट टावर से 35 मीटर ऊंचा वो निर्माणाधीन है, इत्तेफाक से मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसके माध्यम से कश्मीर घाटी बाकी देश के साथ रेल लिंक से जुड़ जाएगी. एक्सप्रेस कॉरिडोर दिल्ली से लेकर के कटरा तक, वंदे भारत ट्रेन वाराणसी के बाद दूसरी कटरा तक शुरू हुई. IIT, IIMs, एजुकेशन हब, एक छोटा सा कस्बा किश्तवाड़ का जिसका इन्होंने फिल्म में दिखाया, कीरू प्रोजेक्ट was being mentioned. That small township has nearly 6, 7, 8 projects put together, which will be generating as much as 6,000 megawatt of electricity, and would be possibly the biggest hub in North India. And this has been possible also because the peace was restored in Jammu and Kashmir. Because peace and development share an reciprocal relationship.
If peace is hampered, the development doesn't happen. If development doesn't happen, it leads to unrest. And today, as was being mentioned in the short film that was shown, just before, if you recall the newspaper headlines before August 5, 6, 2019, तो क्या headline थी? कहीं से ये बयान आता किसी विपक्ष के नेता का कि यदि 370 को छेड़ दिया तो इतनी हिंसा होगी कि खून की नदियां बहेंगी. जनरल J.J. Singh is there, who's seen very closely both Kashmir as well as Northeast. कभी ये कहा जाता है कि कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा. But now, when you look back in the last 2-3 years, the prophets of doom have been proved wrong. हर घर में तिरंगा भी लग गया. जो पत्थरबाजी होती थी समाप्त हो गई. And immediately after the revocation of Article 370 on the 5th and 6th of August 2019, if you just see the first 6 months, beginning from August to January, there were 4 important festivals: Vijayadashmi, Deepavali, Eid, Muharram. 2 Hindu festivals and 2 Muslim festivals, and went absolutely uneventful, without any untoward incident. पहला ऐसा कभी नहीं होता था. त्योहार पर कहीं ना कहीं आतंकी अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए कोई ना कोई वारदात, कोई ना कोई इस प्रकार की घटना अंजाम देते हैं. And that is because the common man walking in the streets and lanes of Srinagar wants peace. He wants to be a part of the development journey led by Modi. And let's not forget, the youth of Jammu and Kashmir is highly aspirational. And that is borne out by the fact that in spite of militancy, you have among the toppers in the civil services from Kashmir Valley. The most terror-affected districts have produced toppers in IIT JEE. In the NEET recently reported result of the NEET, you had the 10th topper for Chopia. That is just about a few days back. So that shows the level of the aspiration that the youth have, and they don't want to miss the bus. And they are very conscious of the enormous opportunities, enormous avenues that have been made available by Prime Minister Modi in the rest of the country, and they want to be a part of that. And then, in the concluding part, when we sum up all this and look at it in a totality, and then of course in the next 25 years, as was being mentioned in the introductory remarks before I came in, what is Modi's futuristic vision, which again would be linked to each one of us, every Indian, and also Jammu and Kashmir. Now again I take back, because I'm trying to speak everything with evidence. If you recall the Independence Day address of Modi on 2015, 15th August, he said, "Start up India, stand up India." And the same day, so many people asked me, "Ke matlab kya hai iska?" The concept was so alien to us, but this was his futuristic vision. He could foresee that if India has to move forward, this is one area which has to be given priority. And if you go by the figures, before this government came in 2014, there were just 300 startups in India, or 350. Today, it is more than 75,000. The number of unicorns is more than 100. And India's startup ecosystem ranks among the first 3 in the world. And even across the world, even in the most developed European countries, startup groups prefer Indian boys and girls. तो प्रतिभा थी, क्षमता थी, परिश्रम करने का मादा भी था. But that motivation, that opportunity, the milieu was lacking, which has been provided by Prime Minister Modi. Biotech is another sector. 15,000 by 2025. And why I'm saying so? Because when we say, हम कहते थे कि अमृतकाल है, 25 वर्ष के बाद हिंदुस्तान शिखर पतल पहुंचे, लेकिन कैसे पहुंचेगा? वो तभी पहुंचेगा कि उन रिसोर्सेज को, उन सरमाए को, उन साधनों को हम जुटा पाएं जो अनएक्सप्लोर्ड रह गए. जब बाकी सारे सैचुरेट हो गए तो ये अनसैचुरेटेड. दिस इज वन एरिया, बायोटेक्नोलॉजी. इंडियाज बायोइकोनॉमी इन द ईयर 2014 was just about $10 billion. Today it is $80 billion, and it is projected to be $150 billion by 2025. And these are the sectors which remain unexplored. The biotechnology, because we have a huge biodiversity.
the biofuels, the agriculture startups, the agri-tech startups, the dairy sector, and the ocean resources, which were never actually thought about. The other day I was sitting with a group of scientists from Australia. I said, look here, you come from a place which is a country, which is also an island, which is also a continent. But the ocean around you is not named Australian Ocean. But I come under Prime Minister Modi, we have started Deep Sea Mission, which was announced by him again in his Independence Day address of 2021 last year. Very soon, and that is going to be the value addition to India's future economy. And the peripheral territories like Jammu, Kashmir, Northeast are going to play a major part in supplementing this. Both agriculture sector, both the dairy sector. And I feel glad to share with you कि अरोमा मिशन जो मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ की है सरकार ने, exploring the aromatic plants for medicinal value, for cosmetic value, it began from Jammu and Kashmir. And Jammu and Kashmir is today known as the birthplace of the purple revolution of India. And that again is a new startup, क्योंकि हमारे दिमाग में घुस गया था कि startup का मतलब IT. It's not so. It's also there in the agriculture sector. It's also there in the dairy sector. And these youngsters are making lakhs out of this. It's a new avenue of livelihood. Most of them are not even science graduates or science students. Most of them are also not carrying any degrees. But they have become part of this aroma mission. The bamboo revolution, beginning from Northeast, is now spreading all over India, including Jammu Kashmir. And a lesser reported fact is that this was also facilitated by Prime Minister Modi. 100-year-old Indian Forest Act was amended. The Indian Forest Act was brought in by the Britishers in 1918. It was amended and the homegrown bamboo was exempted from what is popularly known as forest clearance. क्योंकि घर आंगन में हमारे बढ़ता है bamboo, but it was not being put to use. In this country, we have a business of about 5,000 to 6,000 crore as far as agarbatti is concerned. सारा bamboo यहाँ उगता था, अगरबत्ती बाहर से आती थी. Korea, Vietnam, China. It was Prime Minister Modi under whom the import duty on agarbatti has been hiked to 25%. So that जो साहूकार खरीदने के लिए लालच करेगा उसको ये भी ख्याल आएगा कि इतना महंगा काम करने के बजाय मैं domestic production करूँ. And all this is now happening across the country, including Jammu and Kashmir. And when you talk of governance, you will be surprised to know that the Prevention of Corruption Act, which was formulated in 1988, amended by the Modi government, by my own department, EOPT, in 2018, was not applicable in Jammu and Kashmir. अब आप बताइए, उसमें किसकी आइडेंटिटी पर फर्क पड़ना था, किसकी पहचान पर फर्क पड़ना था, किसके स्टेटस पर फर्क पड़ना था. बट they had their own anti-corruption act, जिसको फिक्स करना है कर दो, जिसको छोड़ना है छोड़ दो. The RTI was their own. It was not the one which is applicable in the rest of the country. ऐसे ऐसे नियम कानून जिसका ना किसी की शनाख्त के साथ संबंध, ना किसी संवैधानिक मर्यादाओं से कोई इसका ताल्लुक, जो मात्र और मात्र समाज कल्याण के कानून थे. उदाहरण के तौर पर डाउरी एक्ट. Now tell me which country of the world will have objection to a dowry act? Or for example, the Child Marriage Act. On the one hand, we deliver lofty platitudes about human rights, human right violations, etc. So which country of the world would object to a Child Marriage Act being there? But it has not been introduced in Jammu and Kashmir. The prevention of sexual abuse. All this has happened after 5th and 6th of August 2019. And before I conclude, finally, where from here? We are into the 75th year. We have completed that. The next 25 years will belong to those, and this is our responsibility to ensure their capacity building, who are in their 30s and 40s and who have energy to dedicate, जो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ
अगले 25 वर्ष भारत के निर्माण में समर्पित कर सकें, बिकॉज दे आर दी वंस who will have the privilege to go around and say, look here, we are the architects of Modi's new India. We are the architects of India 2047. We are the architects of Century India. And as I said, देश के वो हिस्से, वो रिसोर्सेज, वो सरमाए जो अभी तक इस्तेमाल में नहीं आए, they will be making a significant value contribution, और उसमें जम्मू कश्मीर भी रहेगा. इसलिए I can visualize 25 years hence, जब भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा और सारी दुनिया दूर से उसको देख रही होगी, तो भारत माता का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर दूर दूर से आकर्षण का केंद्र होगा. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने विचार रखने के लिए, और स्पेशली कश्मीर के मुद्दे पर हमने देखा कि जो कश्मीर है वो आखिर कितना बदल गया है. लेकिन भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता की बात सर्वोपरि होती है. जिन्हें देश की जनता सत्ता की जिम्मेदारी सौंपती है, जाहिर सी बात है कि उनसे सवाल पूछने का हक होता है. बिल्कुल, हाल ही में हमने देखा कि वाराणसी में ज्ञानवापी पर फैसला आया. एक पक्ष ने यह कहा कि फैसला गलत है, यह फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है. लेकिन इस टिप्पणी से लेकर हिजाब की बात करें, मदरसे की राजनीति की बात करें, हिंसक नारों की बात करें, या 2024 के प्रधानमंत्री पर बयान देने वाले असदुद्दीन ओवैसी अपने बेबाक अंदाज के लिए हमेशा जाने जाते हैं. बिल्कुल, और हर एक मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखने वाले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय राजनीति में एक धर्म विशेष का चेहरा बनकर उभरे हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है. और हिमानी हमारे साथ जुड़ गए हैं असदुद्दीन ओवैसी, और सीधे उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप सब उन्हें सुनते हैं, अक्सर अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं. आप उनके साथ सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, पर आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. आज भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत के राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में. ओवैसी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओवैसी साहब, क्योंकि आज अगर हमें ओवैसी साहब की आवाज मिल पाए, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं. ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में. आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, थोड़ा कुछ दिक्कत है. ओवैसी साहब को आप सब लोग जानते हैं, और आप ओवैसी साहब, मुझे लगता है कोई सवाल ना किए बगैर, क्योंकि हमारी जो आज की एक हमारा विषय है, जो थीम है राष्ट्र सर्वोपरि, अगर मैं उसी से इस संवाद को शुरू करूं और मैं पूछूं, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है ओवैसी साहब?